Hey guys, Assalamu alaikum. This is your girl Saher. Welcome and welcome back to my channel. I hope all of you are doing well. I am doing good too. And this is the first video that I'm shooting in 2024. So happy new year to all of you guys. I hope you had an amazing start of the year and I hope you enjoyed your holidays. So I thought I will, do a nice smoky glam look going on. मेरे पास बहुत सारे vlogs पड़े हैं but मुझे था कि न्यू ईयर की शुरुआत मुझे एक मेकअप ट्यूटोरियल से करना चाहिए, तो इसीलिए आई एम फिल्मिंग दिस फॉर यू गाइज. आई होप यू गाइज लाइक इट. अभी मुझे बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं बिकॉज गर्मी बहुत है. जहाँ पे मैं रहती हूँ मैसूर में, वहाँ पे गर्मी है ही और मुझे तो एक्स्ट्रा ही लगती है. तो इसीलिए मैं फ़र्स्ट क्या करूँगी, फ़र्स्ट ये जो आइस रोलर है मेरे पास, उससे मैं अच्छे से अपने आप को डीपफ कर लूँगी ताकि थोड़े से जो मेरे ओवर एक्साइटेड पोर्स हैं वो थोड़े सो जाए एंड उतना स्वेट ना करे. थोड़ी उनको ठंडक पहुंचाना चाहती हूँ. एंड या आई हैव नॉट डन माई स्किन केयर और एनीथिंग. मैं वो बहुत क्विकली कर लूँगी आफ्टर दिस. I will do this and get back to you guys. Going in with this particular cream. This is from Embryolisse. This is the Lait-Creme Concentrate. I really like this whenever I'm doing a heavy makeup kind of a look. तो अभी शादी सीज़न अभी भी चल रहा है एंड अगर आप कोई पार्टी जाना चाह रहे हो वट एवर, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस. तो मैं बस इतना सा क्वांटिटी ले रही हूँ एंड अपने फेस पे लगा लूँगी. फेस पे अच्छे से लगा लूँगी. That's it for a good minute. अभी हम प्राइमर लगाएंगे. Primer, I am going in with Colorbar's primer. I really like this one. I have used multiple tubes of this in with this much. I'm gonna apply it only where I feel that I need my pores to be shrunk because I have I've got pitted skin, like pitted scars over here. तो उसके लिए थोड़ा सा स्मूथ कर दे स्किन बस. that's why I am going to be using this. For the foundation, I'm going in with Swiss Beauty's Airbrush Full Coverage Foundation and I will be taking 2 pumps on the back of my hand. And what I will be doing is I will be applying a thin layer like that. And then I will be using the Mascara brush and I will be blending that in. ऐसे लगाने से ना प्रोडक्ट ओवर केकी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लग जाता है एक स्पॉट पे एंड ब्लेंड करने के लिए भी बहुत इजी होता है. इफ़ यू नोटिस मैं आइज़ पे नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी हम कंसीलर वगैरह लगाएंगे तो आई की एरिया जो होती है बहुत थिन होती है एंड जितना प्रोडक्ट्स लगाओगे उतना हैवी होता जाएगा एंड फिर आपको अच्छे से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. अभी जो लास्ट में एक्सेस प्रोडक्ट बचा था सिर्फ मैंने वो लिया है ताकि आई एम नॉट डिपॉजिटिंग अ लॉट ऑफ product on my eyes. Before I do in my concealer, I am going in with the color corrector. This is from Mars. This is their Seal the Deal concealer in the shade 01 Orange. Because I have heavy pigmentation on the eye, I want to conceal it a tiny bit, not too much. And मैं हाथ से ही blend कर रही हूँ. उस ब्रश से जो भी एक्स्ट्रा होगा वो प्रोडक्ट डिपॉजिट करूँगी. I'm going in with Mars Wonder Cover Concealer in the shade 03 and taking it in the back of my hand. And जहाँ पे भी ऑरेंज लग रहा है अभी भी वहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी to cancel out all of that.
using Pond's का natural BB glow face powder, setting that in. Today for the makeup look, I am going to be using ucanbe's Exotic Flavours palette, Revolution's Reloaded Hypnotic palette, and this I have this black shade which I need. The small brush, and then I am going to be placing it on the outer parts of it, slowly building in the shape. राइट यहाँ पे थोड़े थोड़े पार्ट्स में मैं वॉइस ओवर करूँगी बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक बज रही थी किसी के घर में, तो मैं यहाँ पे क्विक कूल टोन ब्राउन शेड लेके उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे. द की इज़ टू ब्लेंड इट आउट रियली वेल, एंड देन फ्रॉम द सेम पैलेट आई जस्ट टुक अ लिटिल बिट ऑफ द चॉकलेट ब्राउन शेड विच इज़ अगेन ऑन द कूलर साइड, एंड अगेन आई विल बी ब्लेंडिंग दैट आउट. थोड़ा सा नीचे में ब्लेंड करूँगी ताकि वो chocolatey browny tone अच्छा लगे. And for shimmer, I am going in with this particular shimmer over here. That's the only silver I have in my collection, and I need to buy more grays and silvers because अभी grunge का ज़माना है. What was I doing? I completely forgot. In with this silver. थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, एंड then now it looks good. ओके जब आप शिमर शेड्स लगाते हो या फिर ग्लिटर शेड्स लगाते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू पैक द पिगमेंट एंड नॉट ड्रैग इट. गिव इट लाइट स्ट्रोक्स ऑफ मूवमेंट बट मोस्टली पैक इट बिकॉज अदरवाइज वो शेड अच्छे से नहीं बैठेगा. ग्लिटर इज़ लुकिंग लाइक सो फार. सो अभी मैं क्या करूँगी, जस्ट आई वॉन्ट अ लिटिल बिट ऑफ हाईलाइट ओवर देयर. टू हाईलाइट आई एम टेकिंग अ बोन कलर एंड placing it on top of the silver shade to kind of highlight that area, otherwise it will look grey and mucky. Can you see how this has made the silver pop a bit more, and that is what we want. And I'm taking it under the brow bone as well to clean it up a bit so that it gives us sharpness too. I'm taking in the flat brush and placing the black pigment on the outer corners, and then taking in that transition muted brown shade and blending it in so that it smokes out and softens it up a bit. And then again I'm going in with the chocolate brown as well to make it look more smoky. Then I'm going in with the elf brow pencil and combing my hair first. It has a spoolie and another side it has the product. So this is very good if you want to do natural eye looks, but unfortunately मेरा benefit का मुझे मिल नहीं रहा था, तो I had to do with it. Benefit I use it if I want like a pow chicka wow bows, and this I do it if I need like an everyday soft eyebrows, natural looking eyebrows, then I use this one. So मैं दोनों eyes कर रही हूँ and just filling in. That's why I'm dragging it a little bit more so that more pigment comes in, because इसमें strokes नहीं आते हैं because thick है सामने का wand. And then मैं Essence का Lash Princess mascara use कर रही हूँ. This is the non waterproof one, तो ये थोड़ा सा smudge होता है. It is good if you don't sweat, and it is good otherwise as well because it gives amazing length and what not. But अगर आपके eyes sweat होती हैं ना, you're very teary person, then you cannot use this one. Then I'm going in with Pax Micro Finishing Fixer Spray, and I was worried कि मैंने mascara लगा लिया और नीचे spread हो गया, and I was right, नीचे लग गया था. नेक्स्ट मैं वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्लश यूज़ कर रही हूँ. दीज आर सम ऑफ दी ओल्ड ब्लशेज. इनका पैकेजिंग अब चेंज हो गया है, तो यू विल गेट द सेम ब्लशेज बट इन अ डिफरेंट पैकेजिंग. So in case you are wanting to buy it, all the links are in the description box. If the packaging is if the packaging is changed, then don't be scared. It's the
द सेम थिंग. तो अभी जब ड्राई हो गया था एक ऐसे ब्रश से मैंने उसको निकाल लिया था, तो दैट वे डिड्स नॉट स्प्रेड. Then I am going in with Wet n Wild's bronzer. This is more like a topper than a bronzer, and it has got shiny reflects to it, so it looks very beautiful on the skin. I was very skeptical about it, but I fell in love with it. I really liked it, and I don't know what I'm trying to say, but I had to mute all of these because there was a lot of music in the background. एनी विच वेज हम लोग ऑलमोस्ट मेकअप ख़त्म कर चुके हैं. अब हम लगा रहे हैं टू फेस की मेल्टेड मैट लिप शेड इन द मेल्टेड मैट लिपस्टिक इन द शेड सेल आउट. I don't know, I cannot speak all of a sudden today. And this is a very good shade. अगर आपको कुछ ऐसे स्मोकी करना है तो it is very good. It's a peachy pink, but it's more on the cooler side of the things. फिर मैंने setting spray लिया एक puff पे and under eyes पे थोड़ा सा set कर लिया. This is a good trick for those people whose under eyes crease very fast and very much. This will add a little bit of protection. Then I am going in with Elf's duo highlighter and blush duo in the shade Cantaloupe, and this is a very beautiful shade, champagne shade, but has tiny bit of pink reflex to it. And this is on the cooler side as well, because entire makeup look of mine is on the cooler spectrum of things. So that is what I am doing, and then I'm taking the blush brush and merging everything together, and this is my makeup look. Right, you guys, this is the makeup look I have created. I hope you guys like it. I'm sorry if the angles are a little messed up because मैं back camera use करने की कोशिश कर रही हूँ, तो I'm trying my level best. अगर आपको मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना and share it with your friends and family members. Turn on the bell notification. Follow me on Instagram. I'll see you guys in the next one. Till then, you guys take care.